Hello everyone. Today we will solve a few most important MCQs on our Arbitration and Conciliation Act 1996. Okay. For those who are preparing for AIB 19 examination this year, that is AIB 19. Okay. That is AIB 19. So as you know that in the recent RTI report, the BCI has clearly specifically mentioned that in AIB 18, in AIB 18 in EIB 18 only only 49% of the candidate, okay, only 49% of the candidate could clear this exam. That is last year only 49% of the candidate could clear that AIB exam, okay, and the remaining 51% candidate could not clear this exam. So this is the high time, that is this is the crucial time for all of us to study and to prepare for this exam, upcoming exam, okay, so that we can easily clear this exam. Okay. Let's begin today's session. Okay. तो अभी देखेंगे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन से हम लोग का कैसे मतलब किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. सो today's first question is our, which among the following, okay, options is the main purpose of the Arbitration and Conciliation Act 1996. Okay. Options are, देखिए, to comprehensively cover international and commercial arbitration and also conciliation, as also domestic arbitration and conciliation. And next है to cover only domestic arbitration, to cover only international arbitration. So arbitration conciliation में क्या होता है, देखिए दोनों आ जाता है. ठीक है. डोमेस्टिक भी आ जाता है. ओके. डोमेस्टिक भी आ जाता है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन भी आता है एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी आता है. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी आवर option A. Okay. Option A would be the our correct option because it comprehensively cover both international and commercial arbitration and also conciliation, as also domestic arbitration. Okay, both international and domestic. So in this case option A would be the correct answer. Okay. So now moving to next question. Next question देखिए, an arbitral award shall be enforced in the same manner as if it were decree of what? Options are local authority, the court, the tribunal, both A, B and C. The correct option would be the court. That means an arbitral award, देखिए, arbitral award shall be enforced, जो भी डिसीजन लिया जाएगा एज पर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के तहत. ओके. आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के अंदर जितना भी डिसीजन लिया जाएगा वो कैसे एनफोर्स किया जाएगा, एज इफ इट वेर डिक्री ऑफ द कोर्ट. डिक्री जैसे सिविल केस में जैसे होता है, जो सिविल कोर्ट डिक्री पास करते हैं, ठीक है ना. तो इस डिसीजन को ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा एंड उसको क्या बोलेंगे, आर्बिट्रल अवार्ड, एंड इट विल बी एज सेम एज इट इज बाय द सिविल कोर्ट. ओके. अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सेम टू सेम ही होगा. ठीक है. दैट मीन्स यही बोला है. ठीक है. सो इन दिस केस ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके. सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, एन आर्बिट्रल अवार्ड बिकम्स एनफोर्सेबल. जो भी डिसीजन लिया जाता है आर्बिट्रल अंडर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट में एनफोर्सेबल कब होता है, देखिए, व्हेन द टाइम फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर set aside the arbitral award has expired. An application for setting aside the arbitration award has been refused. Either A and B, neither A and B. So the correct option would be our either A and B. ओके. एनफोर्सेबल जो भी डिसीजन लिया जाता है अंडर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट के अंदर, एनफोर्सेबल कब होगा, एनफोर्सेबल तभी होगा जब द टाइम फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर सेट असाइड. ओके. सेट असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड हैज़ एक्सपायर्ड. अगर एनफोर्सेबल तभी होगा जो जितना टाइम ऑलरेडी दिया गया है फॉर सेट असाइड करने के लिए, अगर वो टाइम एक्सपायर्ड हो जाता है. ठीक है. अगर कोई भी एक डिसीजन लिया गया है एंड उसको सेट असाइड करने के लिए जो सपोज 30 डेज दिया गया है. ठीक है. ओके. 30 डेज दिया गया है सपोज. ओके. एंड अगर ये 30 डेज सपोज एक्सपायर हो जाता है. ठीक है. एक्सपायर हो जाता है.
Okay, then only after the expiry of that period, okay, after the expiry of that 30 period, then that arbitral award will become enforceable. Okay, next देखिए, an application for setting aside द आर्बिट्रल अवार्ड हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। अगर कोई भी एक आर्बिट्रल डिसीजन को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ भी कोई एप्लीकेशन दिया गया है एंड वो जो एप्लीकेशन अगर रिफ्यूज्ड हो जाता है, कोर्ट अगर रिफ्यूज कर देता है लेने के लिए, देन ओनली दैट आर्बिट्रल अवार्ड बिकम एनफोर्सेबल। ठीक है, तो यही बोला है। सो इन दिस केस ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an ad hoc an ad hoc arbitration can be sought. Options are when the parties involved in commercial transaction choose to incorporate arbitration clause as a part of the agreement to render their future dispute. And second option is our when dispute when a dispute arose between the parties to a business transaction could not be settled through mediation or conciliation. So the correct option would be our option B. That means अगर कोई भी ad hoc arbitration can be sought, ad hoc arbitration डिमांड कर सकते हैं, सपोज ऐसे बोल सकते हैं, जब भी अगर कोई डिसीजन, सपोज कोई भी एक डिस्प्यूट होता है बिटवीन द पार्टीज, ओके, to a business transaction, कभी during the any business transaction, ड्यूरिंग एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर दोनों पार्टी में कोई भी डिस्प्यूट एरज होता है एंड कुड नॉट बी सेटल्ड थ्रू मेडिएशन, एंड मेडिएशन और कंसिलेशन के अंदर ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं किया जा रहा है, देन ओनली वी कैन ऑप्ट फॉर एड हॉक आर्बिट्रेशन। ओके, देन ओनली वी कैन ऑप्ट फॉर एड हॉक arbitration। okay, ad hoc arbitration। okay, that means अगर mediation and conciliation fail हो रहा है इधर है, then only we can go for ad hoc arbitration। okay, so in this case option B would be the correct answer। okay, now moving to next question। next question is our next question देखिए, which is correct statement। okay, options are institutional arbitration has its own set of rules। okay, Indian Council of Arbitration is the apex body of the court। The rules may provide for domestic and international arbitration for both, all of the above। तो देखिए क्या बोला है, देखिए विच इज़ करेक्ट, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन जो हम लोग का जो प्रोविजन में दिया गया है आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 में, हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, इसका खुद का रूल है। ठीक है, and इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन विच इज़ द एपेक्स बॉडी, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एंड द रूल्स में प्रोवाइड फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। यस, ये जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट है हम लोग का 1996 का, इट प्रोवाइड्स फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ठीक है, और फॉर बोथ, ये दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के रूल्स प्रोवाइड करते हैं, मैंने दोनों प्रकार के केसेस डील करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी आवर ऑप्शन डी। ओके, दैट ऑल ऑफ द अबव, सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a party within the meaning of section 2 of the Arbitration and Conciliation Act 1996 means, क्या देखिए, party to the contract, party to the arbitration agreement, okay, party to the suit and proceedings, either A, B or C। the correct option would be our option B, that is party to the arbitration agreement। तो इधर पार्टी का मीनिंग क्या है, पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का एग्रीमेंट में जो पार्टी होगा वही वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, प्रोसीडिंग सूट, दैट मीन्स ये मैंने अंडर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन में जो होगा, जो भी प्रोसीडिंग होगा उसको हम लोग सूट नहीं बोल सकते और प्रोसीडिंग भी नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ओके, जैसे जैसे सिविल केस में क्या होता है, देखिए सिविल केस में हम लोग सूट फाइल करते हैं ना, इजंट इट, सूट फाइल करते हैं। ठीक है, एंड क्रिमिनल में क्या करते हैं, क्रिमिनल जो भी करते हैं, जैसे कोई भी मजिस्ट्रेट के पास हम लोग जाके कंप्लेंट दर्ज करते हैं या कोई भी एफआईआर दर्ज करते हैं, हाँ, एफआईआर करते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं, कंप्लेंट देते हैं मजिस्ट्रेट के पास। तो ये सब तो हो गया, जैसे इधर सूट हो गया, और इसको हम लोग क्या बोल पाएंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोसीडिंग्स। ओके,
उसको प्रोसीडिंग्स बोलेंगे अंडर क्रिमिनल लॉ, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ओके। बट अगर अगर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में अगर कोई भी कुछ ऐसा किया जाता है, देन उसको हम लोग बोलेंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। उसको ना हम लोग सूट बोलेंगे, ना हम लोग प्रोसीडिंग बोलेंगे। सो इन दिस केस ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है द डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ओके, अंडर द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 मीन्स sole arbitrator or a panel of arbitrators, sole arbitrator only, panel of arbitrator only, presiding officer only. The correct answer would be sole arbitrator or panel arbitrator. That means जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो हम लोग का जो आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट के अंदर जो एस्टेब्लिश किया जाता है, ओके। तो इधर आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन, इसमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मीनिंग क्या है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर the arbitral tribunal may arrange for administrative assistance by a suitable what? Options are institution, person, either institution or person, neither A and B. So the correct option will be either institution or person. That means arbitral tribunal may arrange for administrative assistance. देखिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस कैसे, क्या कैसे वो अरेंज कर पाता है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल? बाय इंस्टीट्यूशन और बाय पर्सन। कोई भी एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी हो सकता है, कोई भी एक पर्सन के द्वारा भी हो सकता है। सो इन दिस केस ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। The arbitral tribunal has the jurisdiction to options are award interest on the whole or part of the money, award interest on the whole of the money only, award interest on the part of the money only, and either B and C. So the correct option would be our um, option A, that is award interest on the whole or the part of the money, okay. So in this case option A would be the correct answer, okay. So this is for all today. If you like this lecture, please like this video and subscribe this channel, okay. So in this channel I have already started MCQs on many law subjects which are important for our upcoming AIB 19, okay. So if you don't want to miss any of my lecture, please subscribe this channel, okay. So thank you very much. See you in the next video.